In this video, we are going to talk about very tricky and difficult concept of English grammar, and that is clauses and its types. This video is really important for students of master, bachelor's, intermediate and matriculation. हमने ये चीज़ find out की है कि mostly students are unable to identify the types of clauses and they are unable to differentiate between phrase and clause. And if they have identified two basic types of clauses that are independent clause and dependent clause, then further वो उसके आगे जो dependent clause की types हैं उनमें confused रहते हैं. So we have designed the lecture in such a way that your all confusions and ambiguities related to clauses and its types would be resolved. But for that you have to watch this video till the end. Okay, let us move toward objectives of this lecture. In this lecture, we are going to talk about what is a clause and how it is different from a phrase, and what is the structure of a clause. We are going to look towards the structure of a clause grammatically, then what are its two basic types, dependent and independent clause, or you can say principal and subordinate clause. Then we have further subdivided dependent clause into its types. We are going to explain all these types with examples. Okay, let us first of all look into the definition of clause, a group of words having a subject and a predicate of its own and is used as a sentence. If it is a simple sentence, then there should be at least one clause in it, or part of a sentence. It can be a part of a sentence. For example, there can be 2 clauses, 3 clauses and even more. So every complete sentence is made up of at least one or more clause. Clause is different from a phrase. How? We have to consider some differences. अगर हम देखें तो phrase जो है आपके पास जो होगा वो भी group of words से बनता है. But phrase does not convey complete thought and complete meanings. But clause conveys complete thought and complete meaning. In a phrase, we cannot have both of these. In a phrase, we can never have both subject and a predicate. And in predicate, what? Finite verb. But in clause, it is always necessary that we need to have subject, if not proper subject then understood subject, and a predicate, and in predicate we need to have one finite verb at least. Secondly, there are different types of clauses, and in one sentence there must be one independent clause. एक सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना बच्चों लाजमी होता है. लेकिन if a sentence is longer, we can have compound sentence, we can have complex and multiple sentences, and it depends upon how many clauses do we have in that sentence. उस sentence में clauses कितने हैं हमारे पास. So every complete sentence is made up of at least one dependent clause or more clauses. एक dependent clause का होना हर sentence में लाजमी है. Here we have some examples. Shahrukh bought a new car. As you see, there is one finite verb, there is one subject, so this means that there is only one clause in this sentence. So if there is one clause, this means there is going to be only one sentence, or you can say it is a simple sentence. Shahrukh bought a new car, but he is still using his old car. In this sentence we have found out that again this is one sentence, but we have two clauses in this sentence, and this sentence is compound sentence. ये एक sentence की type है जिसके बारे में मैं further videos में आपको explain भी करूँगा. यहाँ पे अगर देखा जाए, why do we have two clauses in this sentence? First finite verb, second finite verb. Now the question arises, what is a finite verb? फिनाइट वर्ब है क्या, कि मतलब ये फिनाइट वर्ब को हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसकी पहचान क्या है. तो अगर देखा जाए बच्चों, तो फिनाइट वर्ब इज दैट वर्ब दैट इज लिमिटेड बाय टेंस, टाइम, नंबर, जेंडर और सब्जेक्ट. ऐसा वर्ब जिसको हम लिमिट कर दें उसे आप फिनाइट वर्ब कहते हैं. लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. शाहरुख बॉट अ न्यू कार. यू कुड हैव यूज्ड बाय अ न्यू कार, but this is past indefinite tense. That is why you have used second form of verb. So because of tense, this verb is limited.
तो जब भी आपका टेंस, टाइम, नंबर, जेंडर, सब्जेक्ट से आपका वर्ब लिमिटेड हो जाए, दैट इज कॉल्ड फिनाइट वर्ब. I think so it would be clear. If it is not clear, I have already formed one video on this topic, that is non-finite verbs, and I have explained non-finite verbs with reference to finite verbs, and you can watch that video. Types of clauses. Every clause has at least a subject and a finite verb. I think so now it would be clear to you कि हर clause के अंदर whether the clause is dependent or independent, उसके अंदर एक subject और एक finite verb का होना लाजमी है. But there are some characteristics that differentiates independent clause from dependent clause. कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो independent clause को dependent clause से differentiate करती हैं. Okay, first of all, we are going to talk about dependent, main or principal clause. These are same but names are different, लेकिन हम इनको same ही consider करते हैं. It is the clause which does not depend on some other clause for its meaning, rather it conveys meaning independently. Independent clause बच्चों ऐसा clause होता है जिसके अपने complete meanings होते हैं, and it does not need to depend on any other clause, और उसको ज़रूरत नहीं होती कि वो किसी और clause पे depend करे अपने thoughts को convey करने के लिए. For example, I'm sitting on a chair. This is one independent clause. Imran will never miss the party. Again independent clause. Which products are they going to launch this year? Again there is one independent clause. So if we read these clauses, we will find out that all of these clauses are independent clauses because they are conveying complete thought and complete meaning. Now the question arises, there are certain sentences of dependent clause which we think as Hindi or Urdu speaker हमें वो लगता है कि वो भी independent clause है, लेकिन वो dependent clause होता है, तो उनकी हम कैसे पहचान कर पाते हैं? When we are going to move toward dependent clause, तब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप उनकी पहचान भी कर पाएंगे. But for that we have to wait towards the next slide, and that is dependent clause. So the evaluation of these sentences or clauses can be mathematically generated as follows. तो अगर देखा जाए mathematically एक ऐसा clause जिसमें both subject और predicate present हो और complete thought दे रहा हो, तो उसे हम कहेंगे main or independent clause. Main clauses can be joined by coordinating or subordinating conjunctions to form compound or complex sentences. This is really important. आप अगर main clause के साथ coordinating conjunction का इस्तेमाल करते हैं और उससे कोई आगे नया sentence बना लेते हैं, जैसे अगर लास्ट हमने पीछे एक sentence यूज भी किया था, शाहरुख bought a new car but he is still using an old one. तो यहाँ पे जो हमने कंजंक्शन इस्तेमाल की है दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं एंड विद दैट वी हैव कंबाइंड टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, देन वी हैव कंपाउंड सेंटेंस. लेकिन जब हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कोई डिपेंडेंट क्लॉज लगा दें एंड दैट इज बिगिनिंग विद द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज बिगिनिंग विद द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देन वी हैव complex sentence. For coordinating conjunction we need to remember this acronym, that is fanboys. अगर हमें ये याद हो जाए तो I think so आपकी confusion दूर हो जाएगी. F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, yet for so, Y for yet, and so for S for so. For and nor but or yet so. I think so now it would be क्लियर टू यू कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो है जो वैसे भी किसी कंजंक्शन के बगैर भी बिगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तो उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ ही बिगिन करना पड़ेगा. मूविंग ऑन, मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज की हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं. ये आपके फैन बॉयज आ गए. ही बॉट अ न्यू कार बट ही इज स्टिल यूजिंग एन ओल्ड वन. विच टाइप ऑफ सेंटेंस दिस इज? When the bell rang, he was cooking the food. Which type of sentence this is? अगर देखा जाए तो this is an independent clause
this is again an independent clause. Why? Because this is beginning with a coordinating conjunction. ये जो है आपकी coordinating conjunction के साथ begin कर रहा है. But over here in this sentence, और यहाँ पे जब दो independent clause हुए, this means this is a compound sentence. लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो बच्चों ये जो when है, this is not a coordinating conjunction. ये हमारे पास subordinating conjunction है, और यही सबसे बड़ा क्लू होता है डिपेंडेंट क्लॉज को पहचानने का, उसकी कंजंक्शन के थ्रू. अगर आपको कंजंक्शन का अंदाजा हो जाए, देन वी आर एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज इट इज. तो यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, दिस इज इंडिपेंडेंट वन. तो जब एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. और यहाँ पे ये अब कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज होगा, वी आर गोइंग टू सी दैट. अब आ जाते हैं हम डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज पे. इंडिपेंडेंट क्लॉज वाज दैट कन्वेज कंप्लीट मीनिंग एंड कंप्लीट थॉट. सो डिपेंडेंट क्लॉज इज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट डज नॉट कन्वे द कंप्लीट सेंस. ये कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग नहीं कन्वे करता. दे कैन मेक सेंस ऑन देयर ओन, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस फॉर कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग. A dependent clause is joined to an independent clause to form a complex sentence. It often starts with a subordinating conjunction. Some common subordinating conjunctions, I have written some of the subordinating conjunctions. तो देखें अगर आपको कोई confusion हो रही है, so we have talked in independent clause, we have just named 7 conjunctions. ठीक है बच्चों, तो dependent clause की ये कुछ conjunctions हैं, you can memorize them. बट इफ़ यू आर अनएबल टू मेमोराइज देम, हमने आगे इनकी कैटेगरीज बनानी है, टाइप्स डिस्कस करनी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम वो भी दूर करेंगे इंशाल्लाह. फॉर एग्जाम्पल, अली फेल्ट सॉरी फॉर हर व्हेन ही रेड हर लेटर. व्हेन ही रेड हर लेटर, दिस इज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज की कोई टाइप नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज की टाइप्स हैं. अब उसके अंदर ये व्हेन जो है, ये आपकी एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है. आपने एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो यहाँ पे जो ये है, ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम को रेफर करता है. सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अब चलते हैं जी हम टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज पे. डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फर्दर टाइप्स ऑन द बेस ऑफ द फंक्शन. ऑन द बेस ऑफ द फंक्शन, वेदर द फंक्शन इज ऑफ नाउन, ऑफ एडवर्ब, ऑफ एडजेक्टिव. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा डिपेंडेंट क्लॉज, दैट इट परफॉर्म्स, एंड दिस फंक्शन इज लिंक्ड टू द वर्ड इन अनदर क्लॉज व्हिच इट क्वालिफाइज. तो ये दूसरे क्लॉज के किसी बेसिक वर्ड के साथ लिंक होगा. अब अगर हम बात कर लें नाउन क्लॉज के ऊपर, वी नो दैट नाउन इज वन ऑफ द बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच. वो एक बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन हमने ये भी चेक करना है कि नाउन की पोजीशन क्या होती है सेंटेंस में. एज वी नो, इट कैन अकर एट द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट, इट कैन अकर एट द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो ये चीजें हमारे लिए थोड़ा सा मैटर करती हैं. बट बिफोर दैट, इट इज द डिपेंडेंट क्लॉज दैट वर्क्स एज अ नाउन. नाउन क्लॉजेज कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, आर एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन. हमें ये याद रखना है कि जो नाउन क्लॉज है, जहां पे नाउन अकर होता है सेंटेंस में, वहीं पे नाउन क्लॉज भी अकर हो सकता है. सम एग्जांपल्स आर एज फॉलोज. एज अ सब्जेक्ट के तौर पे अगर हम नाउन क्लॉज को देखें, व्हाट द मिनिस्टर मोस्ट फियर्ड नाउ हैपेंड. नाउ हैपेंड इज एक्चुअली एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. यहाँ पे ये आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये जो होगा ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, दैट इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ अ नाउन. हुएवर इज द लास्ट वन टू लीव टर्न्स ऑफ द लाइट. टर्न्स ऑफ द लाइट ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जिसका सब्जेक्ट ये है, लेकिन ये ओवरऑल एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज का भी काम कर रहा है. आई थिंक सो इट वुड बी क्लियर. दोबारा बताता हूं, टर्न्स ऑफ द लाइट ये आपका ओवरऑल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बनता है, जिसका ये एक सब्जेक्ट है और उसका सब्जेक्ट अंडरस्टूड बन रहा है, लेकिन ये एक डिपेंडेंट क्लॉज भी है. मूविंग ऑन, एज एन ऑब्जेक्ट, a group of words having a finite verb and it is used in place of an object as a noun. Tell me who left this book on the table. Tell me is an independent clause.
who left this book on the table is a dependent clause, and this clause is a noun clause because we need to have information about the object, and the information about the object is provided through this clause. As a complement of a verb, a word or a group of words used as a complement, these spellings are wrong, you need to correct these, used as a complement in place of an object as a noun. The theory is what we call excellent. तो बच्चों जब आप verb के बाद, अब ये कौन सा verb है, when we use linking verb और being verb, जब हमारे linking और being verb के बाद कोई words आए तो those words are considered as complement, and in the complement we can either have noun clause or an adjective clause, but over here this is a noun clause. The theory is what we call excellent. The theory is good, the theory is bad, so we can use even adjective or we can use noun, but over here this is a noun clause. As an object of preposition in this noun clause functions as an object, you know, always remember that preposition, after preposition we have a noun phrase. If we can have a noun phrase, that this means we can even have a noun clause, और यहाँ पे कोई clause नहीं आ सकता. We cannot provide seats for आ गया बच्चों, this is preposition. All who may come, all who may come, this is a noun clause. Moving on, types of dependent clauses. Adjective clause की हम जरा बात कर लेते हैं. Again, adjective clause will perform the same function like adjective, and that is it is used to qualify a noun or pronoun in any sentence. तो वो किसी noun या pronoun को qualify करते हैं. तो adjective clause would be used in order to qualify a subject, qualify a direct object, or qualify an indirect object of main clause. अब हम यहाँ पे देख लेते हैं. Books that have illustrations sell well at Christmas. In this sentence, books sell well at Christmas is a main clause. अब देखें, ये आपके पास एक embedded clause भी आप इसे कह सकते हो. Books sell well at Christmas, ये आपके लिए overall complete meaning convey कर रहा है. अगर आप इसे देखें, ये जो books sell well at Christmas है, ये आपके पास complete meaning convey कर रहा है. But in order to have more information about books, we have embedded another clause that is an adjective clause that have illustrations. Qualifies a direct object word. I made a dress that I intend to wear. अब यहाँ पे अगर देखा जाए, I made what? This is a direct object word that is directly receiving an action from the verb. तो यहाँ पे ये आपके पास that I intend to wear is an adjective clause that is modifying a direct object word, and it even can modify an indirect object word. I sent to my sister who went abroad. I sent to my sister. I sent what? This is direct object. My sister is an indirect object. So in order to have more information about indirect object, I have embedded another clause, and that is an adjective clause. I think so आपको अभी clear हो चुका होगा कि noun clause क्या है यहाँ और adjective clause क्या है. Now moving on to adverbial clause. As we know that adverb performs three functions in any sentence. It can either qualify or modify a verb. It can either modify an adjective or another adverb. Likewise, adverbial clause also performs three functions: modifying a verb, an adjective and another adverb. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं the ferry sailed when the tide was high. यहाँ पे ये जो adverb clause है, this is modifying this verb sailed. The ferry sailed when the tide was high. तो यहाँ जो ये adverbial clause है, this is adverbial clause of time, and this is modifying this verb, modifying an adjective. The profits were as large. Profits, noun, as large, this large is modifying this profit, so this is an adjective. और अगर हमने इस adjective के बारे में कोई extra information दी थ्रू किसी verb के थ्रू, तो वो adverb के थ्रू सॉरी, तो वो आपका adverb phrase या adverb clause बनता है. तो यहाँ देखा जाए तो ये एक adverb clause है. Why? Because we have both subject and we have finite verb as well. Modifying another adverb. He drinks greedily as he eats. He drinks greedily. Greedily is one adverb, and this adverb is modified by another clause
that is an adverbial clause. अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो adverbial clauses ज़्यादातर we have noticed that they are mostly in your paper in the form of objective. तो यहाँ पे हम इनकी कुछ categories मैंने बनाई हैं आप लोगों के लिए, we can talk on those as well. Adverbial clause of place, time, cause, purpose, concession and condition. Place refers to, there are certain question words that can answer these. Place where, time when, cause why, purpose what, concession why is this, unexpected, condition under what condition. Where there are the computers, there is Microsoft software. After the fruit is harvest, it is sold at the market. तो अब यहाँ पे देखें after the fruit is harvest when के through refer हो रहा है. I called him because it was my responsibility, because why के through refer हो रहा है. She took an IT course so that, so जो है वो purpose को refer करता है. Although Ali has good education, though, although, even though ये condition और concession में आ जाते हैं और यहाँ पे if भी आपका condition में आ जाएगा. And I think so now all these types would be clear to you. Independent clause is the one that conveys complete thought and meaning. Dependent clause does not convey complete thought and meaning. Clause is different from a phrase because clause has both subject and predicate, and in the predicate it has finite verb. And phrase is also a group of words, but it does not convey complete thought and it never carries both subject and predicate. Secondly, clause is divided into two types, independent and dependent. Then dependent clause is further divided into further types, noun clause, adjective and adverbial clause. And noun clauses are further divided into types according to the position that it has in any sentence. Likewise, adjective clause and but adverbial clauses are divided into different types according to the function that they perform in any sentence. It can be a adverbial clause of time, place, condition, concession, purpose, and so on. Okay, moving on to conclusion. To sum up, knowledge of grammar and especially of phrases and clauses is pivotal for complete understanding of any text. It provides cohesion and coherence to the text. The usage of clauses show diversity in grammar and they should be handled with great care. That was all from today's lecture. If you have any confusion, you can type in the comment box. We are going to answer your questions, but for that you need to like and subscribe our channel. Thank you so much.